Hey, Hum TV, how's it going? Well, to be honest with you, सबसे पहले जब मुझे कहानी सुनाई गई तो obviously पता चल रहा था it's something different after a very long time. So that was one reason. Secondly, my character, and then third, most importantly, when I got to know that Sabaa is also a part of the project. Sabaa Kamal. अंदर आ जाइए, मैं चाय बना देती हूँ। I'm playing the character of Junaid. He's a very layered character, very different, lots of shades. Very challenging actually. अब इसके बारे में ज़्यादा details तो बता नहीं सकता क्योंकि हमेशा पूछा जाता है कि आपका character क्या है. But if I let you know all about him, then what's going to be left when you guys watch the drama? So be on the lookout. The experience so far has been amazing. For me, it's like I'm getting to learn a lot. बहुत कुछ देखने को सीखने को मिल रहा है, especially when it comes to the scenes because like I said, ये script बहुत different है, बहुत challenging situations हैं. So I'm getting to learn a lot from her and she's a wonderful person and it's been a great experience so far, to be honest. यही तो एक मामा है। कह सकते हैं मासूम. It's a little bit of both. A little bit of both, for sure. Well, to be honest with you, I'm a foodie. I love all sorts of food. लेकिन आजकल I'm on a very strict diet plan. I've shot a lot in Karachi. I've shot in Lahore. I've shot in Islamabad में shoot करने का मेरा I believe कोई दूसरा या तीसरा experience है. Islam is very calm, very peaceful. It's not bad at all. Karachi is very fast, but I believe कि once in a blue moon, बल्कि या once in a while एक साल के अंदर आपको एक break लेनी चाहिए and you should come down to Islamabad and shoot. It's very nice and pleasant. Every project is a stepping stone. So if you are sensible enough, आप उससे सीखते हो. It's like I said शुरू में कि ये challenging character है, इसके बहुत shades हैं और बहुत straight character नहीं है, बहुत ही lovey dovey नहीं है, बहुत angry नहीं है. He's somewhere in between and he's giving a little bit of a flavor of all those emotions. So it's like a very fine line. It's tricky but it's very nice. मैं बहुत enjoy कर रहा हूँ. That's actually a very good question because I do really respect my directors a lot. जो उनकी इनपुट होती है, जो उनकी सजेशन होती है, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ. मैं कहता हूँ एब्सोल्युटली जैसे आप बोल रहे हैं और सीन की जो रिक्वायरमेंट होती है. लेकिन आई डू बिलीव कि मैं भी सीन को एक तरीके से विजुलाइज करता हूँ. व्हेन आई एम रीडिंग माय स्क्रिप्ट, व्हेन आई एम डूइंग माय होमवर्क, तो मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि अगर मैं डायरेक्टर की चीज़ों को रिस्पेक्ट करूँ, अप्रिशिएट करूँ, तो जहाँ मेरे पास कोई ना कोई सजेशन हो, आई वुड रियली बी happy if the director would also, appreciate my input and, take it into consideration and then we can work together as a team. What kind of chemistry? Yeah. The chemistry is very, it's interesting. It's interesting. That's all I can say. After a very long time, एक बहुत अच्छा script, एक बहुत अच्छा drama आने वाला है on Hum TV, and it's going to be a project that I'll be doing for Hum TV after a very long time. काश मैं तुम्हारी मक्कारी के बारे में पहले ही समझ जाता, शिजा की बात पर यकीन करता, तो आज तो मेरे सामने ना खड़ी होती. और तुमने क्या सोचा था कि सब कुछ इतनी आसानी से हाथ होगी? So I'm sure all the projects that Hum executes are very, very nice. But with this one, it's a mystery. And if you like mystery, if you want something different than what you see on your screen usually, then look out for this drama only on Hum TV. जिंदगी गुजारने और मोहब्बत करने में ज़्यादा मुश्किल क्या है? जिंदगी किसी न किसी तरह गुजर ही जाती है, मगर ये कमबख्त मोहब्बत न जीने देती है न मरने.